adjacent sides are equal and adjacent angle are equal. Okay, and then after square, no sorry, then after rectangle. In a rectangle, opposite sides are equal. All the angles are equal at 90 degree. The length of diagonals are equal, and the diagonal bisect each other. And now in last square. In a square, all sides are equal, all angles are equal with 90 degree. Diagonal bisect each other at perpendicular, and the length of diagonals are equal. From the basic of this, all the properties, we have to solve exercise 3.4. Okay? And in 3.4 exercise, in question number 1, state whether true or false. जस्ट हमको ये बताना है कि ये सच है या गलत. ठीक है. ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो एक ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर खाली आप समझ लेना. मैं यहाँ पे लाइव बोर्ड में आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ कि क्या ऑर्डर आपको याद रखना है ऑलवेज. सबसे पहला है ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम की जो भी प्रॉपर्टी होगी ना, वो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में आ जाएगी. All the properties of trapezium are included in parallelogram. Okay. And then after rhombus, all the properties of parallelogram are included in rhombus. And then after all the properties of rhombus are included in a square. And here I am drawing one arrow. All the properties of parallelogram are fulfilled by rectangle. Please remember this order, because of from this order we will solve our first question, true and false. Okay. First is trapezium. All the properties of trapezium fulfilled by parallelogram. The properties of parallelogram is fulfilled by rectangle and rhombus. And then after all the properties of rhombus is fulfilled by square. Okay. तो अब हमारा जब भी क्वेश्चन होगा ना, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर सबसे पहले जो भी दिया है ना वो छोटा है कि बड़ा है, वो देखेंगे. ठीक है. और उसके ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि ये सच है कि गलत. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. तो रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं हो सकता, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है. क्यों? क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल से बड़ी है. ठीक है. गर्ल्स समझ में आ रहा है? यस. ओके. तो स्क्वायर जो है ना वो बड़ा है, तो यहाँ पे स्क्वायर पीछे दिया है, मतलब कि आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग. समझ में आ गई बात? गिव मी आंसर प्लीज. ततहीर, देलिशा, हेलो. यस सर. समझ में आ रहा है? यस. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन, ऑल rhombus आर पैरेललोग्राम. ये सेंटेंस सही होगा, देखना. क्यों? क्योंकि rhombus की प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम से ज्यादा है. आपको ऑर्डर देखना हो तो एक बार ऑर्डर देख लो. देखो rhombus कहाँ है? ये है rhombus. ये पैरेललोग्राम से बड़ा है, तो ये सेंटेंस सही होगा, ऑल rhombus आर पैरेललोग्राम. ये एकदम सही है. ठीक है. तो आपका सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू. देन आपका थर्ड स्टेटमेंट है, ऑल स्क्वायर्स आर rhombus एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स. इट इज ऑल्सो ट्रू because of in a square all the properties of rhombus and rectangles are fulfilled by square. तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू है कि नहीं? हेलो, ट्रू होगा ना? यस. ओके. देन फोर्थ स्टेटमेंट, all squares are not a parallelogram. ये गलत है. जितने भी स्क्वायर है ना वो सब पैरेललोग्राम है. क्यों? क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ज्यादा है पैरेललोग्राम से. ठीक है. तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा.
Then E, all kites are rhombus. ये सेंटेंस सही है कि नहीं? बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि rhombus की प्रॉपर्टी काइट से ज्यादा है. एक बार देख लो यहां पे लाइव बोर्ड में. ये है आपके पास काइट. इन अ काइट the adjacent sides are equal, and in rhombus all the sides are equal. And what is the meaning of all the side? Means this two adjacent side and this adjacent side also equal. It means the properties of rhombus is more than kite. So it is false because of kites are smaller properties. Then next question, all rhombus are kites. It is true because of the properties of rhombus is more than kite. And then all parallelograms are trapezium. It is also true because of the properties of parallelograms is more than trapezium. And then all squares are trapezium. It is also true because of all the properties of square are fulfilled by trapezium. Okay. Now write down the question number 1. I'm just writing T and F. In a first question, it is F, false. In a second question, it is true. In third question, it is true. In fourth question, it is false. In fifth question, it is also false. In sixth question, it is true. Then also true, and then true. Write down fast. Sir, done. Sir, done. Sir, your mic is mute. Okay. Now we are doing question number 2. Please see here. Identify all the quadrilaterals that have four sides of equal length. Please remember all the properties of quadrilateral. You know very well in rhombus and square, all sides are equal. So write down your answer is rhombus and square. Okay. And in second question, for right angles. And you know all the properties of quadrilateral. Only rectangle and square having four equal angle with 90-degree measurement. So your answer is rectangle and square in second question. Write down these two answers. In first answer, your answer is rhombus and square. And in second,
Your answer is rectangle and square. Written, all of you? Hello. Yes. Okay, now third question. Explain how a square is a quadrilateral, parallelogram, rhombus, and rectangle. Please see this question in live board. Where is live board? Here. Okay, now we have to explain how square is a trapezium, a quadrilateral, a rectangle, and rhombus. Okay, so just first point is a quadrilateral. We have to give some argument in favor of quadrilateral. Your first argument for proving the square as quadrilateral, because of in a square four vertices are present. It is your first argument. Four vertices, four sides, and four angle. On the basis of these three conditions, we have said that a square is a quadrilateral. Right? Now second point. Now we have to prove trapezium. Okay, and we have to prove square as a trapezium. We have to write down only one argument. In a square, only one pair of opposite sides are parallel. Okay. There is only one argument in favoring trapezium for proving this square as trapezium. Okay. Then third, we have to prove square as rhombus. ટ્યુબ નથી જોતી પાણીની બોટલ જોવે બહાર જ પડી પાણીની બોટલ લઈને okay now rhombus we have to prove square as rhombus. For this we have to give some argument. Your first argument is all sides are equal in a square. All sides are equal. And the another argument is diagonal bisect each other at perpendicular. Diagonal bisect each other at perpendicular. Okay, and now last question. You have to prove square as rectangle, and for this we have to give some argument. Your first argument is in a square all the angles are equal with 90-degree measurement. Are equal with 90-degree measurement. And this another argument is the length of diagonals are equal. In a square, the length of diagonal are equal. Okay, now write down this question. We have to prove square as quadrilateral, trapezium, rhombus, and rectangle with the help of some common properties of these four, and we are proving that. Okay, write down fast. सर स्क्रीनशॉट ले लिया नो सर युकी सर क्या हुआ बेटा?
स्क्रीनशॉट ले लिया वैसा। नहीं सर बेटा, लिख लो ना, तो लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको प्रॉपर्टीज याद भी होगी ना यार। और वैसे आज के लेक्चर में हमको 3.4 कंप्लीट ही करनी है, और तो कुछ करना नहीं है, तो टाइम है हमारे पास, लिख लो। ठीक है। सर डन। सर डन। ओके गर्ल्स, कितनी गर्ल्स प्रेजेंट है आज? मुझे लगता है कि आप लोगों की पेरेंट्स मीटिंग हुई, उसके बाद में यार कोई फर्क नहीं आया है। पेरेंट्स मीटिंग के बाद में मुझे लगा था कि शायद आप 25 तक ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन अभी भी वही हो 11 और 12। लेकिन आनंद को कुछ पता नहीं, बोलना ही बंद कर दिया है, ऐसा कि ना? यस सर। बोलना बंद कर दिया है क्या तूने? नो सर, सर मैं ज्वाइन हुई तब आप लिखा रहे थे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। तो 8 बजे ज्वाइन होना था ना, 8:15 पे ज्वाइन सर होती, बाद में तो मैंने लेक्चर सर शुरू कर नहीं दिया हो था। सकी। नहीं हुई है। क्यों? सर सो रही थी। क्या सो रही थी? अल्पेश सर, इसको रिमूव करो पहले। अरे सर। मैं अल्पेश सर को बोल देता हूँ कि अभी कोई भी गर्ल्स है ना, वो 8 बजे, 8 और 5 के बाद में अगर ज्वाइन होती है तो उसको रिमूव ही करना है। ओके कर देता हूँ सर, रुको अभी। नहीं नहीं रुको, अभी आज के लेक्चर में रहने दो। नहीं 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 नहीं, कर देता हूँ। यस सर। यस नहीं नहीं नहीं, रहने दो। ओके ओके। ठीक है चलो, अब हम कर लेते थर्ड क्वेश्चन हमारा। नहीं, थर्ड तो हो गया ना, फोर्थ क्वेश्चन। नेम द quadrilaterals whose diagonal bisect each other, are perpendicular bisector of each other, are equal. ओके, अब डायगोनल की प्रॉपर्टीज जो है वो हमको याद करनी है। क्या है डायगोनल की प्रॉपर्टीज, जल्दी से देख लो एक बार। देखो, सबसे पहले हमने ट्रेपीजियम किया था, तो ट्रेपीजियम में तो डायगोनल की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं थी। फिर हमने किया पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी? ओनली बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की, ठीक है। एंड यही प्रॉपर्टी दूसरी किस में आती है? रेक्टेंगल में आती है। कहां पर? रेक्टेंगल में भी हम ऐसा बोलते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ऐसे है कि उसकी प्रॉपर्टीज में आता है बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। देन दूसरी बात, बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखते हैं हमारे क्वेश्चन की तरह, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कौन से क्वाड्रिलेटरल में बोल रहे थे? एक तो रोम्बस में बोले थे, ठीक है, और दूसरा बोले हम स्क्वायर में। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ऐसे है कि उसमें हम बोले थे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर, एंड थर्ड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टीज जो है वो हम दो क्वाड्रिलेटरल में बोले थे। वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है? आर इक्वल लेंथ, ओके। आर इक्वल है। हाँ, इसमें आएगा एक रेक्टेंगल और दूसरा आएगा स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में हम बोले थे कि इन दोनों के डायगोनल जो है वो इक्वल लेंथ के हैं, ओके। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो क्वेश्चन नंबर 4। नेम द क्वाड्रिलेटरल having bisect each other, diagonal bisect each other, diagonal perpendicular bisector and diagonal are equal length, ओके। तीनों के हमने आंसर लिख दिए, जल्दी से लिखो। Sir, done. ओके, Sir, done. सर डन। okay girls, now see question number 5. Explain why a rectangle is a convex quadrilateral. Okay, first of all, identify the concept of convex and concave quadrilateral, okay. I already explained you that in a convex and concave quadrilateral, if diagonal bisect each other, sorry, diagonal intersect each other, so it is convex. And if diagonal not intersect, it is concave. Please see here in these two figure A, B, C, D. Here first diagonal is AC and second diagonal is BD. In first figure, diagonal intersect at one point, it is convex. And in second figure, a quadrilateral ABCD in which diagonal AC and diagonal BD are not intersect. So it is concave. Concave. Okay. And if diagonal intersect, it is convex. So in a rectangle, diagonal intersect. So it is convex. Yes or no? Yes. Okay. चलो लिख लो जल्दी से. You have to just draw the figure and write down one statement only. Here the diagonal bisect each other in a rectangle. So rectangle is a convex quadrilateral. Okay. Okay, sir. लिखो लिख जल्दी लिया. लिखो. ओके सर। Written, sir. Written. सर लिख लिया. जल्दी करो, लास्ट क्वेश्चन बाकी है, 5 मिनट है हमारे पास. Sir, photo ले ली. ABC is a आई right also angled triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain
Why? O is equidistant from A, B, C. The dotted line are drawn additionally to help you. ओके कुछ नहीं करना है हमको, बस एक सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और उसमें हमको थोड़ा से कुछ बातें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी। ओके, in which O is a midpoint of side AC, and we have to prove that O is a equidistance from A, B, and C. Means if I join OB, let us assume that if I join OB, this distance OA, OB, and OC, these three distances are equal in a length. We have to prove just that. Okay, now see here. First of all, I am drawing this dotted line for completing a rectangle. Okay, and I am putting one point here, D. Now I am joining this B and D point. So here tell me It's AC concave. and BD are diagonal? Yes Yes, or no? it's convex. Yes, AC and BD are diagonal, right? And yes, the length of AC is equal to BD because of in a rectangle. Okay? Yes or no? Yes. Yes. Okay. And in a Yes. rectangle, the diagonal bisect each other. Bisect means we have to divide in an equal part. So here AC diagonal divide in two equal part AO and OC. So just we prove here diagonal bisect each other. It means OA is equal to OC, and in diagonal BD, OB is equal to OD. Okay? Yes or no? Yes. Okay, now one another properties of diagonal rectangle, the length of diagonals are equal. So AC is equal to BD. Both the diagonals are in equal length. So AC is equal to BD. It means if AC and BD are equal, it's all the parts are equal. So OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD. So what is the meaning of this statement? O is the equidistance from point A, B, and C. Hence proved. Okay? Yes or no? Yes, sir. Okay, write down. Here our chapter number 3 completed. In next lecture we will start chapter number 12, exponent and power. Write down fast.